one or two thing I had in my hand like that. मैंने सोच रखा था कि if यहाँ पे नहीं होगा, don't worry, I would have the NCC entry, IMA entry and the CFF assistant commandant interview, कि मैं कहीं ना कहीं I would be set. Jai Hind and very warm welcome. Sorry. जय हिंद एंड वेरी वार्म वेलकम टू मिशन एसएसबी। मेरा नाम है आकाश मिश्रा और आज हमारे साथ एक और रिकमेंडेड कैंडिडेट जुड़े हैं जो अभी रिसेंटली रिकमेंड हुए हैं 1 AFSB देहरादून से, जिनका नाम है अजय। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अजय सर, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर गेटिंग रिकमेंडेड। Thank you, Akash. तो अजय सर, आप हमारे सारे व्यूअर्स को आज अपने बारे में बता दीजिए, आप अपनी स्कूलिंग के बारे में और अपने कहाँ से आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। आपकी माई अब यही एयरफोर्स ही करना है और कुछ नहीं करना, उस एयरफोर्स ही करना है, जाना तो फौज में ही जाना है। Starting about me, my name is Ajay Kumar. I belong from Rajasthan, the district of Jhunjhunu, and in the particularly the Jhunjhunu belong from Raila. It is a very small village near the Pilani to Avera, and I have done my schooling from Jawan Navodaya Vidyalaya, which is also placed in my district. And after that, I took admission in the Delhi University, from where I completed my graduation. And particularly about the motivation, I was a part of the NCC in 9th or 10th class. That time I decided to do something advanced. But when I came in the college, where I also opted for the NCC, and I felt the responsibility like a corporal and junior under officer, and I even did the para basic course, Thalsanic camp. So all these camps, I got a familiar environment regarding the army. So I wanted to join the armed forces since my first year. I have put efforts on the various things like my communications and adventurous activity. I was fully means in the 3 year I have in the college 3 year I have contributed 1 year directly or indirectly to NCC during my college times, and I have learned throughout my nearly half things which I will be get trained during the academy in advance during my NCC training. And about the motivations, this is the only motivation because the armed forces will not only provide me or any other youngster the job satisfaction, because it also provides the respect which we will get from our subordinates. Like we can take example of an engineer. If he is an engineer, he is working on a package of the 20 lakh or 25 lakh. Or a similar rank, a group captain or a wing commander, when they both meet after the 10, 15 or 20 years, that time all the other fellow mates, colleagues, society members respect the armed forces persons more. कुछ बंदे ने कुछ ना कुछ अलग किया होगा, बेशक उसके पास मनी इतनी ज्यादा ना हो, बट द रिस्पेक्ट द फील which comes with the worthy. This thing motivated to join me the armed forces. बहुत अच्छा था ये तो। और फिर लेके हमें ये चीज़ मालूम चली कि आपका 3rd अटेम्प्ट है और आपके इसके पहले जो अटेम्प्ट थे आप उन दोनों में आप स्क्रीन आउट हुए थे। तो आपका भी आपने उन 2 अटेम्प्ट से आपने क्या सीखा, कि आपको कहाँ लगा कि आपने उन 2 अटेम्प्ट में कहाँ क्या गलती की और आपने क्या क्या अपनी उस गलतियों में आपने इम्प्रूवमेंट किया, कि इसको कैसे ओवरकम किया? My first and second attempt, first attempt was the NCC entry, second was the FCAT entry. In these both attempt, in the first attempt everything was well, but there was a lot of strength in the NCC entry, so I could not make it that entry. But in the FCAT entry, because I was very desperate to join the armed forces, and since I have already told you about that from the first year I wanted to join these things. So in that the screening part, I did over participation, as well as my voice. I kept my voice very loud. So I think that this thing did not give the positive impression to the assessor. They thought this guy tried to dominate the group. I think this thing made me
2 time screen out, and after that I realized this thing I would not be do this thing again, and that's why I got a screening in the third time. चलो फिर आपके अभी बात करते हैं एफ कैट। जैसे आपने बोला एफ कैट की एंट्री के थ्रू गए हो, तो हमारे कुछ कुछ व्यूअर्स होते हैं जो मतलब रिटन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो आप हमारे बता सकते हैं कि आपने एफ कैट की प्रिपरेशन कैसे की, आपने कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया, अगर आपका कोई वीक सब्जेक्ट था तो आपने उसे कैसे हैंडल किया। तो और आप अपना एफ कैट का स्कोर बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। Particularly about एक बात है So the thing is that I have prepared, I have started my preparation after my college. Due to the COVID-19, I could not be given my all the 6 semester examination. So I came home. I started the preparation of the bigger target, the CAPF Assistant Commandant and the CDSC exam. I have cleared both these examinations. So in the FKT, you have to be, because I was from a humanities background from 11th and 12th class in the graduation also. So the mathematics, the portion, which was very crucial for me. So I decided that if I would be opted for 10 to 12 questions, which would definitely write. मैंने कुछ sections select कर लिए जैसे percentage, profit and loss, and some other area where I can score. And apart from that, you have to be go through the previous year question paper, which is SSB crack and the various other website you can easily find out on the YouTube or टेलीग्राम ऐप। तो वहां से वो पेपर का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। द सेकंड थिंग इज दैट जितने भी आप मॉक पेपर दे सकते हो, यू कैन डू दिस थिंग बिकॉज दैट विल बी डेफिनेटली इनहेंस द कॉन्फिडेंस एज वेल एज इन द ड्यूरिंग द मेन पेपर वी आर डूइंग सिली मिस्टेक्स लाइक 3 मार्क्स ज्यादा नंबर बढ़ाने के चक्कर में वी हैव टू बी टू द अननेसेसरी रिस्क। उस अननेसेसरी रिस्क को मैंने कम किया एंड इन द दिस अटेम्प्ट I was able to score 182 marks for the FKT. ये तो अच्छे मार्क्स। और हमारे सारे व्यूअर्स को शायद जो जिनको लगता होगा कि भाई अगर हमें एफ कैट और सी डी एस लिखना है और अगर आई में इन सब में जाना है तो हमारी मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने एक अच्छा एग्जांपल सेट करके दिया है कि आप मैथ्स के थोड़े बहुत टॉपिक्स में आप अपने सब्जेक्ट को तो स्ट्रांग रखो ही रखो, और अपने मैथ्स के थोड़े बहुत टॉपिक्स को भी आप पढ़ लो, भले अगर आप उस बैकग्राउंड से, लेकिन पढ़ना चाहिए। आपने हमारे बहुत अच्छा एग्जांपल सेट करके दिया है। और फिर हमें आप बात कर अब हम बात करते हैं हमारे आप मतलब अपने एसएसबी की प्रिपरेशन। जैसे आप मिशन एसएसबी के प्लेटफॉर्म से जुड़े हो, तो हमारे मिशन एसएसबी के प्लेटफॉर्म ने और अमित सर जो हमारे मेंटर हैं, उन्होंने आपकी कैसे हेल्प की एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए, और आपने उसके बाद आपने अमित सर ने आपको अगर आपकी वीकनेसेस बताई होंगी और आपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट भी किया होगा अपनी वीकनेसेस को, तो आपने उस पर कैसे आपने इम्प्रूवमेंट लाई, और हमारे व्यूअर्स का ये भी बता दीजिए। And talking about the preparation, I have started my preparation from my first year or second year to take participate in the various activity like NCC, debating society, and the various other. This thing should be. I am telling this thing all the NDA candidates who are preparing for the NDA. वो NDA की preparation के साथ साथ other चीज भी करते रहे. So if they are not able to do make it in the NDA, so they would easily made in the graduation level entry. तो अपने कॉलेज के जो कीमती वक्त है उसको वेस्ट ना करें। एंड द सेकंड थिंग इज दैट व्हेन आई केम मींस आफ्टर द सेकंड स्क्रीन आउट, one day I was just scrolling on the telegram, that time I found out the Amit sir video or covid ka time tha, and this is my one strength that I always want to take the actions because if you are thinking that मेरे को एक दिन यूनिफॉर्म मिल जाएगी, one day I will get recommended, तो उससे नहीं होने वाला। एटलीस्ट यू हैव टू टेक a step whether it is right or wrong. तो मैंने या I have contacted to sir that sir I wanted to scroll to take the admission in your course, so I have talked that time I get enrolled myself for this course, and I found that यहाँ पे the particular benefit is that some doubts which I had in my earlier times की the screening part की हमें कैसे participation करना है, उससे लेके थोड़ी क्लियरिटी आई कि ज्यादा नहीं बोलना है, कम भी नहीं बोलना है, बट यू हैव टू बी क्रिएटिव इन द ग्रुप एंड मेक योर ग्रुप अहेड फॉर द कॉमन कंक्लूजन। तो वो इस पार्ट ने मेरे स्क्रीनिंग में हेल्प की। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरव्यू के लिए ऑल दीज लेक्चर्स व्हिच अमित सर हैज टेकन
on this platform. I have wrote down all these points in my one notebook. I have listened down that I self-introspected that this is the point. What is the reason behind this point? And I prepared all these questions. Uh, all these questions vary from person to person and answer also. So I even prepared some counter questions that where I am lacking and about the weaknesses because in the FCAT or even in the army boards right now the weaknesses your friend uh, what weaknesses your friend tell about you, what your friends tell parents tell about you, and what you think about you. This question is a very important question, and when I Yeah. on came on this platform, that time I realized that which type of the weakness we should have to tell the interviewing officer. So I have introspect that this is the weakness, and along with that, I have also started to work to improve that weakness. So I would be tell also the efforts that sir I have done this thing to improve this thing. So this thing helped me to introspect myself. Even I have already told you that I prepared each and every question. So this thing helped me. Hmm. And daily discussion on the Skype is also beneficial to improve your communication skills and to make a like-minded group and continuous practice toward your goal. That's all. तो बहुत बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि हमारे मिशन एसएसबी ने आपकी भी इतनी हेल्प की और आपने पहले से ही अपने आप में इम्प्रूवमेंट आना शुरू कर दिया था फ्रॉम फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। तो अभी हम बात करते हैं आपके एसएसबी के बारे में। आपका जब देहरादून गए, आपका ये थर्ड अटेम्प्ट था, तो आपको जब आपके कितने बंदे पहले आपकी कितने कैडेट स्क्रीन इन हुए थे, कितने रिपोर्ट किए थे, कितने स्क्रीन इन हुए थे? That day, almost 208 or 209, 210 candidates have reported for screening, and 60 हम्म were screened in. Means हम्म 210 में से 60 screening हो गए थे, and out हम्म of them 6 got recommended. हम्म। तो जब आप अपने स्क्रीनिंग के राउंड के लिए गए होगे तो आपको अपने बाकी पिछले 2 अटेम्प्ट के बारे में भी याद आई होगी कि यार पिछले 2 अटेम्प्ट में मैं स्क्रीन आउट हो गया था। क्या आपके इस थर्ड अटेम्प्ट में जब आप दे रहे थे तभी भी आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा था? तो अगर या फिर आपके दिमाग में ऐसा इसके रिलेटेड कुछ चल रहा था या आपके प्रीवियस 2 अटेम्प्ट के रिलेटेड? Yeah, yes, it is a common phenomenon that whenever you go for something uncomfortable things or which is not in your control, you will definitely feel little bit anxiety, fear, and whatever the name you can give it. कुछ anxiety कह देते हैं, कुछ fear. कि वो mind में सबके पीछे चलता रहता है कि what will be the next. But one or two thing I had in my hand like that. मैंने सोच रखा था कि इफ यहाँ पे नहीं होगा, डोंट वरी, आई वुड हैव द एनसीसी एंट्री, आईएमए एंट्री एंड द सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट इंटरव्यू कि मैं कहीं ना कहीं आई वुड बी सेटल डाउन. That is only to give me assurance that I am not alone or I am not just मेरे पास कुछ भी नहीं है करने को. And apart from that, one of my friend were along with me that screening part. तो उसने बोला कि just in the last 2 years you got a screen out. ये कभी कभी हो जाता है क्योंकि स्क्रीनिंग इज ए वेरी डिफरेंट प्रोसीजर. अच्छे कैंडिडेट्स भी बाहर हो जाते हैं. So एकदम I एकदम made myself I made myself very calm, and I made my story was completely different from others. But the technique which I learned from this platform that I I was very calm. I helped my group to reach out a common conclusion. That technique made me screening, and वो डर सभी को लगता है, but ultimately you have to be perform. तो आपका तो जब आप स्क्रीन इन हो गए होंगे तो शायद एयरफोर्स में साइकोलॉजी ऑन द सेम डे हो जाता है, साइकोलॉजी टेस्ट। हाँ, तो अगर आपका तो इवनिंग में होगा, पहले आपने जब पहला पड़ाव पार किया आपका स्क्रीनिंग का, तो यू वुड हैव बीन लिटिल बिट रिलैक्स, आपको बहुत हैप्पी फील हुआ होगा। तो उसी समय साइक का पार्ट आ गया, साइकोलॉजी का। तो फिर आपने जब आपका साइकोलॉजी का था कि आपने टैट वैट और टैट आपने कैसे हैंडल किए, वैट में आपने कितने 60 वर्ड में 60 के 60 वर्ड किए, या फिर आपने भी उसमें आपको लगा कि हाँ इन 2 वर्ड का मैं कोई सेंटेंस नहीं बन रहा, ऐसे कोई सेंटेंस से आपके फ्रेम नहीं हुए? और आपका एसआरटी के बारे में पूछा था, एसआरटी आपने कितने अटेम्प्ट किए थे? Talking about it after the screening, because one of my friend who went along with me, he got screen out, and he ओके earlier got he got earlier screen in NCC entry and FCAT entry. Means he was
गुड इन द कम्युनिकेशन बट ही गोट स्क्रीन आउट। तो सर एक ऐसा लगा कि मेरा फ्रेंड ही आउट हो गया है, तो इट गिव मी अ लिटिल बिट sadness also, but I thought I have done very hard work for the SSB. I have to be perform here. और वो डे बहुत ही ज्यादा हेक्टिक था बिकॉज आफ्टर a lot of the documentation we have to be fill PIQ और around the 7 p.m. we have started our psychology। तब तक पूरा मैं सुबह 4 बजे उठे थे फॉर द स्क्रीनिंग। तो ऐसा लग रहा था कि आज पूरा दिन खत्म क्यों नहीं हो रहा है। तो 7 बजे जब हमने स्टार्ट किया अबाउट द दैट माय स्ट्रेटजी वाज दैट we have to be some picture I have connected with my experience like NCC sports, my family, which I easily get connected with them, and two or three, four story which were not connecting with myself or my experience. I used to make all the story regarding the imagination. Like one story came on the mountaineering, so I made assuming that one of a Indian Army personnel going for the mountaineering course, तो वहां पे इमेजिनेशन का कुछ काम किया। और माय टेट वेंट वेरी वेल बिकॉज इट इज जस्ट ओनली द पॉजिटिव थिंकिंग। यू हैव टू बी मेक वेरी सिंपल स्टोरी, not create the negative। the simple approach was that, and for the wet I used to read the novel from my second year, so I had a good on the positive words। so उसे बना दिया। particularly about the negative words, I also used to connect all these negative word related to the society problems, and give us some solution that how we can solve the poverty। The education can eradicate poverty, and education can be a solution of terrorism। This type of the way I have encountered, and meanwhile I was not able to give the answer of 3 to 4 weight, but I written down all these weight my psychological the chart sheet। I went back after completing the SB, and I have completed all the 60 weight। I did not left any weight, and and talking about the SRT was simple, whatever the thought that came in your mind, but just need to be finish the task। Means in a not many SRT, the people used to be go that one person is going there, and meanwhile he got stuck in any accident or anything। You have to be at last time to be consist that your person have completed that goal target your SRT। By this approach SRT easily can be encountered। I have completed nearly 50 SRT, and after that I have completed my SC। That's all। तो वही है कि मतलब हमारे व्यूअर्स को बता देते हैं कि अजय 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 सर का कहने का मतलब ये है कि मतलब हमें टैट अपने जितना चाहे उतना हमारे अपने अपने रियल लाइफ के जो भी हम पीआईक्यू में हॉबीज या फिर रियल लाइफ में जो भी करते हैं अगर हो सके तो उसमें अपना टैट डालिए। और फिर वही है बात रही अगर वैट की तो आप अपना जितना चाहे उतना वो कैप सही कीजिए और जितने चाहे उतने पॉजिटिव थिंग्स से अपने एक एक वर्ड को लाइए। इवन इफ द नेगेटिव थिंग्स कम्स तो हम उसे पॉजिटिव लाना चाहिए। और वही बात रही एसआरटी में कि कुछ भी हो जाए हमें अपना गोल अकम्प्लिश करना चाहिए लास्ट में। Yes, yes, एकदम। exactly। अरे तो ये बहुत अच्छी बात हुई। तो आपका इंटरव्यू आपका साइकोलॉजी के लिए डे 2 में हुआ था या फिर बाद जीटीओ के बाद हुआ था आपका इंटरव्यू? My interview went on the 4th day after अच्छा तो GT। फिर हाँ तो अभी फिर आप जीटीओ की बात कर लेते हैं। अब आप स्क्रीन इन हो गए तो आपके ग्रुप भी डिवाइड हो गए होंगे ऑन स्क्रीनिंग डे ओनली कि आपका भाई ये ग्रुप है। तो जब आप लोग रूम में गए तो पक्का है ऑब्वियस है कि ग्रुप ग्रुप वाले लोग बैठते हैं फिर अगले दिन की तैयारी करते हैं। तो आपका ग्रुप कैसा था? आपके ग्रुप में रिपीटर्स कितने थे या फिर स्क्रीन आउट कैंडिडेट्स कितने थे? और कैसा था आपका ग्रुप को मतलब ग्रुप कैसा था कोऑपरेटिव था कि नहीं ड्यूरिंग द टास्क? In my group we were 8 members, and some of them screen out or some of them fresher। The group was very cooperative, and सभी तो हमारा फर्स्ट ग्रुप था। तो we have very the age of each person was only just 20 or 21 year। तो किसी में ये नहीं था कि I am only coming to get recommend, and सभी की थिंकिंग फ्रेश थी because they did not have any mess up और any कचरा नहीं था उनके माइंड में कि हम इसको नीचा दिखाएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। तो इस चीज ने सच में हेल्प की। एंड फर्स्ट डे तो हम जैसे ही रात को 11 बजे के
अलोंग आए थे, फिर बस खाना खाया, खाना खा के सो गए थे। उस दिन तो कुछ नहीं। नेक्स्ट डे वी वेंट इन द जीडीओ। तो जीडीओ में इन द जीडी और जीपी, बिकॉज वी इंटरेक्टेड दैट टाइम फर्स्ट टाइम। सो उस टाइम कुछ एक या दो लड़के में हुआ, क्योंकि वो होता है whenever we have more knowledge, we want to show that knowledge in front of others। एक या दो लड़के ने ट्राई किया कि मैं मेरा सारा नॉलेज इसी दो चीजों में दिखा दूं। But after that GP, we got a 10 to 15 minute break. In that break, we all meet again in a waiting room. तो हमने तब आपस में कंसेंसस बना लिया था कि हमें ऐसे करेगा तो कोई सिलेक्ट नहीं होगा। हमारा मेन एम है कि वी हैव टू बी फिनिश द टास्क एज ए टीम। तो जो एक या दो बंदे उस टाइम भावनाओं में बहकर कुछ ज्यादा बोल रहे थे, तो वो भी समझ गए थे कि ऐसा कर नहीं करना। वो दिल के अच्छे थे, बट उन्हें पता नहीं था कि कैसे परफॉर्म करना है, क्या चीज ऐसे सर देख रहा है हमें। तो उस चक्कर में शुरुआत में जीडी और जीपी में थोड़ी सी भसड़ हुई थी। बाकी है ना, सारा ग्रुप कोऑपरेटिव था इन द पीजी टीम। इवन वी वर फ्रेशर्स, वी कंप्लीटेड ऑल दीज 4 टास्क इन पीजीटी। एचजीटी भी कंप्लीट हो गया था। एंड अबाउट ऑब्स्टेकल आई डिड 10+1 ऑब्स्टेकल इन द एएफएसबी, व्हिच वाज द वेरी हाईएस्ट। क्योंकि वहां पे बंदे 5 ही कर पाते हैं। तो माय फिजिकल was good, and even my lecture day, I used to practice lecture at home every day, 5 to 6 lecture in the last days. So in AFS right now they have changed one thing, is that all these topics come randomly. Humans, urban forest, poverty, malnutrition. In means it want to check your power of expression, communication, your confidence, and the various things। पहले तो ये होता था कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक होते थे कि वो पक्का आ जाएंगे उनमें से एक या दो, लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस। आजकल एएफएसबी में ये चीज चेंज हो चुकी है कि ऐसा टॉपिक होगा जिसके बारे में आप नॉलेज होगा। यू हैव टू बी सो योर कम्युनिकेशन, योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस, योर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। तो इस चीज की आपको डे टू डे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वेरी डिफरेंट थिंग्स। इसी बस हम अकोमोडेशन में रहते थे, सारे एक साथ खाना खाते थे। ग्रुप वाज वेरी कोऑपरेटिव। किसी ने मतलब ये नहीं सोचा, एक दूसरे की हेल्प भी करते थे। आने के बाद डिस्कशन करते थे कि कल कैसे अच्छा करें। दैट्स ऑल। बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपका ग्रुप, आपने मतलब आपका ग्रुप कोऑपरेटिव था, और आपने अच्छा हो कि आप बता दें कि अब एफएसबी में ऐसे लेक्चरेट के टाइम में ये सब चेंजेस आ चुके हैं। तो अब हमें आप बताइए, आपका फिर ये तो डे टू डे से हुआ, कभी आपके आपने मतलब जीटीओ और साइकोलॉजी टेस्ट के दौरान कभी आपको लगा कि आपने कहीं कि यार यहाँ एक गलती कर दी मैंने, कि यार ये नहीं करना चाहिए था? ऐसा कभी, लेकिन कुछ कुछ कैंडिडेट को लगता है कि भाई यहाँ एक गलती कर दी, ये नहीं करना चाहिए था। तो आपको भी कभी ऐसा लगा कि यार यहाँ पर या फिर थोड़ा और अच्छा कर सकता था, या फिर आपने यहाँ पर आपको लगा कि भाई यहाँ पर गलती कर दी, इसको आप उस चीज को आपने उस थॉट को उस समय आपने कैसे ओवरकम किया? First, I want to give your answer in such a manner that whenever you are going to do any task first time, it is sure that you will do small mistake, because no one can do any task first time with full perfection. The second thing is that 100%। क्योंकि जितनी बार हम करेंगे परफेक्शन आती जाएगी। हुआ मेरे साथ भी। I got realized that one or two TED story I could make a little bit better। मैं वो मतलब इतनी अच्छी नहीं कर पाया था, क्योंकि I have perceived little bit में all characters I could not be able to perceive all the characters, but मेरे को लगा। The second thing is that in the GTO, I written down everything about the GP timing, even the distance। My GP, the format was okay, but I could not be write a last line that they will be meet at this point and they will be reach for their goal। And GP में PGT में मेरे को in the starting, because I did not have experience on the ground task, so in the first or second stage I could not get the good ideas, but in the third or fourth I got idea। तो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि मैं पहले से ही आइडिया दे दूं, बट एंड another thing is that कुछ लोग कहते हैं कि हम एक गलती की वजह से रिजेक्ट हो गए, लाइक दैट उन्होंने एक चीज वैसे ही कर दिया एसएसबी में एक चीज। व्हाट आई हैव फील्ड, आप एक गलती के कारण ना तो बाहर हो सकते और ना एक अच्छी चीज के कारण आप रिजेक्ट हो सकते। इट इज जस्ट mistakes or series of good things which make you recommend or which make you non recommend।
मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आपने इतना अच्छी चीज़ बताई कि मतलब आप मतलब एक चीज़ में अगर आपने गलती कर दी तो सबके सब गलती करते हैं, कोई 100% परफेक्ट नहीं होता। और आपको एक ऐसे थॉट आते हैं तो कोई नॉर्मल बात है कि अगर आपको लगे कि यार ये कर सकता था, लेकिन आपको उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। डू योर बेस्ट, कितना भी उस पर्टिकुलर मोमेंट में कर सकते हो। ये बहुत अच्छा लगा सुन के। हम्म, तो फिर अब आपकी बात करते हैं इंटरव्यू आपका, जो जैसे डे 4 में इंटरव्यू हुआ, तो ऑब्वियसली फ्रेशर्स का इंटरव्यू था, तो आपका पहले रेपो बिल्डिंग आपकी ही बड़ा मेड यू फील कंफर्टेबल और ये सब। तो आपका इंटरव्यू कैसे चला कि आपको उसने थोड़ा बहुत ग्रिल किया, या आप पे कहीं प्रेशर डाला आपके इंटरव्यूइंग अफसर ने, या फिर ऐसा कुछ किया? First day I wait almost 2 hours in the waiting room हाँ, at the AFSB Dehradun. So when I went in the interview room, he asked me a question that what were you doing outside in the waiting हम्म, room? So I हम्म, gave a very means that answer came automatically genuinely. So हम्म, I told the sir I have waited this moment from the last 4 years. I am waiting to हम्म, meet a person who will. I am waiting to meet my recommendation. Like this type of the genuine answer came that this is the moment for this. I am waiting from the last 4 years, and in the last 2 hour I am realizing that what I have done in the my past life to achieving हम्म, or to come at here. So sir, I felt very happy. मैं उसी के बारे में सोच रहा था. This answer really impressed my IU, and वो मत वहीं से वो खुश हो गए थे. And after that my interview went around 1 hour 50 minutes. They have ओहो, they complete they completely asked question regarding my family, my friends, and CC. Because हम्म, I have lot many certificates, so I put the certificates regarding the games and हम्म, my NCC and other activities. So if in the AFSB, if you have certificate of anything, there is a very less probability हम्म, that the interviewing officer will ask question regarding that thing. He will ask question regarding any other thing in which you do not have any proof. वो चेक हम्म, क्रॉस चेक करने के लिए ग्रिल वगैरह का मेरे को, क्योंकि आई वाज prepared in a well manner, and हम्म, I have given almost in a very honest answer and all these things in a proper manner. So हम्म, one or two question he tried to be grill like that role and responsibility. I was the best captain in my school, so he told that about the role and responsibility, which type of the indiscipline activity your juniors हम्म, did and how did you tackle that. वो स्कूल में इतना ही होता है कि हम जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने को है, हम किसी और को पास ऑन करते हैं कि ऐसा ऐसा काम मत करवाना. तो उन्होंने कहा डिड हम्म, इट राइट और रॉन्ग. तो ये तभी कहता हूँ, एक चीज आपको रिकमेंड भी नहीं करवाती, एक चीज आपको रिजेक्ट भी नहीं करवाती. मैंने बाकी जो फ्रेंड्स फैमिली टीचर्स पे अच्छे से हो गया था, फिर इसमें मेरे को थोड़ा सा लगा एक क्वेश्चन में जहां मेरे को थोड़ा गिर किया गया था. अदरवाइज आई वाज प्रिपेयर्ड इन ए वेरी वेल हम्म। मैनर, सो आई ऑल द आंसर इन ए कंफर्टेबल. बहुत अच्छा लगा है जान। तो आपसे जी आपके इंटरव्यूइंग अफसर ने लाइक बहुत लोगों को होता है कि यार करंट अफेयर्स हमारे अच्छे होने चाहिए इंटरव्यू के लिए, आपसे भी कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछे गए थे? The reason is that the interviewing officer were asking this type of the questions from other persons, because I have cleared the CAPF assistant commandant examination and the CDSE and the IMA and OTA examination. So I have अ, put down. Hello, हेलो, my video is clear. Okay, okay, right now it is clear. आपकी आवाज़ अभी क्लियर आ रही है। हाँ, आप बोलिए। हम्म, तो मैं कह रहा हूँ कि इस टाइप के जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ये अदर हम्म, कैंडिडेट से पूछे गए थे, बट आई डिड नॉट गेट a chance to ask this type of the questions because I had cleared the CAPF assistant commandant examination and the CDSE examination. So I had put up all the admit card of these in my document folder. So they got हम्म, enough idea that this guy had enough reasoning ability and the knowledge, so they did not waste their time on this thing. And the second thing is that अगर आप जो फैमिली फ्रेंड्स टीचर स्कूल पे अगर अच्छे जवाब दे रहे हो ना, तो वो वहीं पे पूछेंगे आपको. करंट अफेयर पे तो वो जब बोर हो जाते हैं ना कि दैट यू आर नॉट गिविंग द गुड आंसर इन अदर फील्ड से, तो वो सोचते हैं कि हम्म, चलो इसका करंट अफेयर नॉलेज भी चेक करते हैं. So that's why I did हम्म, not ask any question regarding current affairs. Otherwise, I was prepared. I even told them, sir, I used to
read newspaper and even the lot many videos on the current affair, but they did not ask me any question regarding that. हाँ, तो ये तो अच्छा था, लेकिन एक हमारे लाइक एक बोलते हैं कि ना कि जब जब लोग जो जो कैडेट्स होते हैं वो अपना पीआईक्यू फॉर्म फिल करते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स का, उन्हें लगता है कि उन्हें या फिर नेशनल या फिर स्टेट लेवल या कॉलेज लेवल खेलना ही होना चाहिए, तभी वो चीज़ डाल सकते हैं। ऐसा 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 तो मेरे को नहीं लगता ऐसा होता है कि अगर उन्होंने उससे पूछा कि आप कोई भी गेम खेलो, अगर आपको उसकी थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, और हाँ अगर आपको कोई ऐसा गेम है जिसकी आपकी पूरी नॉलेज है, तो ऑब्वियसली यू शुड राइट दैट। आपको अगर थोड़ा भी गेम खेला हो, भले आपने अपने दोस्तों के साथ भी खेला हो, वो लिखना चाहिए। तो आपने भी ऐसा कुछ लिखा था जो आपने बस जो आपने स्कूल या नेशनल या सब कॉलेज लेवल में ना खेला हो, बस ऐसे ही नॉर्मली आपने दोस्तों के साथ खेला हो, ऐसे आपने कोई स्पोर्ट्स लिखे थे उसमें? So I had got enough opportunity to play all these games at my school level, like हम्म। kabaddi, football, hockey, cricket. So I had the certificate, and I have played at least each game at the school level. So I did not four हम्म। games का place होता है, मेरे 4 गेम थे जो मैंने कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया था. But you can write all हम्म। these things because वो मैटर करता है. If you have write down that you played only 1 year this game, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि आपको 1 साल जितना नॉलेज हो. एंड हाँ, अगर आपने लिखा मैंने 5 साल खेला है, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि आपने 5 साल जितना नॉलेज हो. वही आज हाँ. नॉलेज हो, And हाँ। so you just or you have to be busy. If you are writing somewhere, you can just it will take only 1 and 2 hours. You can just open the Wikipedia or YouTube and write down the basic thing about that game. It is not a hard thing. You are going for the armed forces as a officer, so you have to be prepared for little things. If you do not have any certificate, if you have certificate, then I think in the FCAT or AFSB board they will be not grill you because all your knowledge have been checked earlier. या सही बोल रहे हैं आप, ये बहुत सही बोला। तो फिर इसी के साथ फिर आपका इंटरव्यू के बाद तो अब हो गया, तो आप हमारे कुछ हमारे क्या एक मेरा एक डाउट था कि आपका जब जीटे हुआ था आपका कमांड टास्क कैसा गया था, वो कमांड टास्क क्या मिला था? लोग एक मिथ है कि कमांड टास्क में अगर आपको बॉम्ब डिफ्यूजिंग जो माइंड डिफ्यूजिंग होता है वो मिला है, तो मतलब आपका जीटे बहुत अच्छा गया है, ये मिथ बोलते हैं। तो आपके आपको आपको भी कुछ ऐसा मिला था या आपके जो मेरा रिकमेंड हुए थे उनको? in my group we two got recommend, and my another friend who got recommend, he called me as a subordinate, so his task was also good, my task was also good. I had a means in the AFK code there is not a like mine, there were the different type of the structure वे बहुत simple थे कि एक तरफ कोई बॉम्ब है, वो बॉम्ब को जाके वापस लेके आना था. तो हाँ I हाँ हाँ, gave वैसे one idea. I gave one idea, then I gave second idea, then हम्म। I did one mistake. वहां पे जो बॉम्ब था, जो हेल्थ हम्म। होम मटेरियल था, I asked to my GTO, sir, can I use that thing also? So that time he told that you are commander, whatever you feel you can take your decision. तो मैंने उस पे बंदी रखवा दी. देन फिर उन्होंने कहा ये तो इसमें तो बॉम्ब है, ये फट नहीं जाएगा. देखो मैं तो कमांड टास्क में भी इतनी बड़ी गलती हुई थी मेरे से. तो फिर मैं बोला सर सॉरी सर मैं भूल गया था. और दैट टाइम आई डिड नॉट टेक एनी स्ट्रेस बिकॉज मैं हंस रहा था पूरे पूरे जीटीओ टास्क में. मींस आई वाज इन ए स्माइलिंग और इन मींस सम लाइक जीडी और जीपी में सीरियस जहाँ पे जरूरत थी. देन फिर उसने एक आइडिया मेरे को आया भी नहीं था. आई हैव ट्राइड, देन आई गिव ए वन आइडिया दैट इन दैट आई नीडेड टू पुट द मैन पावर. मींस वो इतना अच्छा आइडिया नहीं था. उस टाइम उनको भी समझ में आ गया कि अभी इसको इतने ज्यादा आइडिया आ नहीं रहे हैं, और फिर उन्होंने मेरे को भेज दिया. वैसे कमांड टास्क के इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं था, बट इतना ज्यादा इजी भी नहीं था. अबाउ मॉडरेट और लेस हार्ड आई हैड फेल्ट. फिर आपको हमारे कुछ आगे के डिफेंस एक्सपीरियंस हो जो भी हमारे अपकमिंग कैडेट्स हैं उनके लिए थोड़ा कोई टिप्स, कोई मोटिवेशन टिप्स? The best motivation and tips is that you have to be prepare a strong backup plan. That at least मैं यहाँ नहीं जाऊंगा तो मैं यहाँ तो चला ही जाऊंगा. और that backup plan should be equivalent to this the armed forces job. Like you would at least get the equivalent amount in that area. So in the interview you would be
मोर कॉन्फिडेंट, मोर रिलैक्स, दैट कि मैं इतना तो कर ही रहा हूँ, ये तो मेरे लिए वो है कि हाँ, दैट टाइम इट विल बी हम्म, शो योर zeal कि अगर तुम्हारे पास इतना बैकअप प्लान है, इफ यू आर अर्निंग 6 लाख और 7 लाख पर ईयर, ये अब इंटरव्यूइंग ऑफिसर के भी ये दिखाता है कि दैट गाय इज मोर पैशनेट, ही इज लिविंग 7 लाख रुपीज जॉब टू गेट ओनली फॉर द आर्म फोर्सेज, हम्म, द बिकॉज दिस लाइफ इज ऑल्सो a harsh or a tough life. And the second thing is हम्म, that all these means first year, second year, or third year candidates is that they have to be participate in more things because it will be enhance their exposure and उन्हें पार्टिसिपेट खाली नहीं बैठना है कि मैं जस्ट आई एम वेस्टिंग माय टाइम ऑन द मोबाइल और समथिंग एल्स, ये चीज ना करो, चाहे कुछ भी करो, दैट आल्सो डिपेंड ऑन इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट. एंड द थर्ड थिंग इज दैट इट इज ए एवरलास्टिंग गेम, यू हैव टू बी प्ले विद मींस एक ग्रुप बना लो अपना, जितना भी उस ग्रुप में आपस में प्रैक्टिस करते रहो. कभी ये नहीं है कि हो जाए तो भी ज्यादा खुशी नहीं मनानी है, नहीं हो तो भी ज्यादा गम नहीं करना है, चलते रहो. एकदम आपने अच्छा बोला. तो फिर आपको एकदम अजय अजय सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस एंड फॉर ऑल द यंग एक्सपीरियंस. शायद उनको कुछ सीखने के लिए मिले. एंड कॉन्ग्रेट्स अगेन फॉर गेटिंग रिकमेंडेड. थैंक यू. तो फिर ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट तगड़े रहो और मेहनत करते रहो. यूनिफॉर्म तो हम पाएंगे ही. वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना. और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो या फिर आप कुछ नया चाहते हो अगले कंटेंट में, तो आप प्लीज़ अपने हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. जय हिंद.